गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है उन्होंने COP28 में, जो कि दुबई में हुई है, वहाँ पर ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है, लॉन्च किया है, जहाँ जिसका मीनिंग ये होगा कि डिग्रेडेड वेस्ट लैंड जो होता है वहाँ पर प्लांटेशन की जाए ताकि जो है कार्बन क्रेडिट्स अर्न किए जा सकें। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं। तो अगर आप एक कंपनी हो, समझ लो, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आप अगर एमिशंस करते हो तो आपके ऊपर अगर हम एक कैप लगा दें कि आप 100 टन से ज़्यादा के एमिशन नहीं कर सकते, तो उसके बेसिस पर अगर आप समझ लो 90 टन्स करते हो एमिशन, तो आपके पास 10 कार्बन क्रेडिट रह गए, मतलब आपने 10 टन नहीं किया एक्स्ट्रा। उसको आप किसी ऐसी कंपनी को बेच सकते हो आगे, या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बेच सकते हो जिसने 110 कार्बन या एमिशंस कर दिए हैं। 110 टन्स, मतलब अपने से 10 ज़्यादा जो है वो एमिशंस कर दिए हैं। तो इसका डुअल इफेक्ट देखने को आपको मिल रहा है। जिसने ज़्यादा एमिशन की है उसको पेमेंट देनी पड़ रही है, उसको खर्चा करना पड़ रहा है। जिसने कम किए हैं उसको एक इनकम का सोर्स मिल गया है ना। तो इसको हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट्स। ठीक है, इसको हम सेल कर सकते हैं। अननीडेड क्रेडिट्स जो है उसको किसी और कंपनी को बेचा जा सकता है और उससे जो है वो पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, तो ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव जो है वो यही करेगा। एक इन्वेंट्री बनाएगा डिग्रेडेड वेस्टलैंड की, जहाँ पर जो है यूटिलाइज़ किया जा सकेगा। अब इसमें एक और आपका कंपोनेंट हो जाता है कि समझ लो एक आप कंपनी हो, आपने 100 टन्स तक की आपको एमिशन अलाउड है। आप अगर प्लांटेशंस कर देते हो वेस्टलैंड पर इतने प्लांट्स की, जिससे कि लगभग 20 टन्स जो है कार्बन एमिशंस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो भी आपको जो है वो आपने अपने 100 टन्स में से, अपने 100 टन्स करने के बाद भी ये माना जाएगा कि आपने 80 टन्स की एमिशन की है। मतलब आपने, क्योंकि 20 टन्स जो है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करने के लिए आपने प्लांटेशंस कर दी हैं। ठीक है, या फिर अगर आप इंडिविजुअल्स हो या आप ऑर्गेनाइजेशंस हो जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करती है, आपने अगर 50 आपने इतनी प्लांटेशंस की जिससे 50 टन्स जो हैं वो कार्बन एमिशंस जो है वो कम हो रही हैं अगर इन्वायरमेंट से, तो आप उस 50 टन्स को के कार्बन क्रेडिट्स जो है वो उन सोसाइटीज़ को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को बेच सकते हो जिन्होंने जो है कार्बन एमिशन ज़्यादा की हैं परमिसिबल लिमिट से। ठीक है, तो इस सब का बेसिक मोटिव देख रहे हो क्या है कि एमिशंस को रिड्यूस करना, एमिशंस को जो है फिक्स करना कि इससे ज़्यादा एमिशंस जो है वो ना की जाए। ठीक है, चाहे इधर से प्लस करो चाहे उधर से माइनस करो, हमें अपने 100 टन्स पर, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि हमें 100 टन्स पर मैक्सिमम लिमिट लगानी है। ठीक है, अब यही ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव कह रहा है कि डिग्रेडेड वेस्टलैंड्स जहाँ पर इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस ये प्लांट्स लगा सकेंगी, उसकी एक इन्वेंट्री तैयार की जाए, डिजिटाइज किया जाए पूरे प्रोसेस को, जहाँ पर जो है प्लांटेशंस करके लोग ग्रीन क्रेडिट्स रिसीव कर सकते हैं और उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म और एक इनोवेटिव तरीका है जिससे वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस जो है उनको हम इंसेंटिवाइज कर सकेंगे। और इंडिया में जो ये GCP गवर्नेंस है उसको इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो है वो संभाल रहा है। ट्री प्लांट्स कर सकते हो आप, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, किसी भी तरह का प्रोसेस जो अगर अगर आप करते हो तो उसके बेसिस पर आपको ये ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, साइक्लोन मिचोंग। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, साइक्लोन मिचोंग की जो है वो वार्निंग दी है, जो कि एक फोर्थ ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ है इस साल। ठीक है, साइक्लोन बेसिकली एक लार्ज स्केल सिस्टम होता है एयर का, जो लो प्रेशर एरिया के सेंटर, उसका जो सेंटर होता है वो लो प्रेशर एरिया होता है और उसके आसपास ये एयर रोटेट होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे नाम से हमें पता लग रहा है कि वार्म ओशन वाटर जो होते हैं इक्वेटर के पास वहाँ पर डेवलप होते हैं, और इसकी एवरेज स्पीड लगभग 120 किलोमीटर्स पर आवर होती है। इसके जो है मिडल में एक आई डेवलप होती है जो कि एक काम एरिया होता है, लो प्रेशर का एरिया होता है।
ठीक है। ऐसे ही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जिनका जो कि लो प्रेशर एरियाज के पास ही डेवलप होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो है इनका जो जो ये डेवलप होते हैं ये 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री लैटिट्यूड के एरिया के बीच में, ट्रॉपिक्स के बाहर मतलब डेवलप होते हैं। इनको इसलिए हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स कहते हैं, ठीक है। और ये लैंड और सी दोनों ही पर जो है डेवलप हो सकते हैं और एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट क्यूपर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अमेजॉन ने रिसेंटली स्पेस एक्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि जो है 3236 सैटेलाइट्स जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाई जाएंगी। और ये अमेजॉन का ही एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि वो हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। फास्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड जैसे स्टारलिंक है, इलॉन मस्क के ही स्टारलिंक जैसे ब्रॉडबैंड सर्विसेज दे रहा है सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू, वैसे ही अमेजॉन जो है प्रोजेक्ट कुइपर के थ्रू जो है वो देना चाहता है। ये सैटेलाइट्स जो हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस की जाएंगी और ये डेटा ट्रैफिक को रिले करेंगी गेटवे एंटीनाज और के थ्रू कस्टमर को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसमें कि वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है बेसिकली 2001 में इसको बनाया गया था और ये गारंटेड क्लियरिंग और सेटलमेंट फंक्शंस देती है। कौन सी ट्रांजैक्शंस में? जैसे जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव मार्केट्स या फिर रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये जो आपके क्लियरिंग कॉरपोरेशंस होती हैं, ये करती क्या हैं? जो ये कॉन्टिन्यूस लिंक्ड सेटलमेंट होती है, ये बेसिकली एक इनिशिएटिव होता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज क्लियरिंग बैंक्स जो हैं वो सेटलमेंट रिस्क जो होता है उसको कम करते हैं या फिर एलिमिनेट ही कर देते हैं। कैसे होता है अब आपको समझ आएगा। जब भी कोई फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो रही है, समझ लो रुपी और डॉलर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, एक कंपनी इंडिया की रुपए में ट्रांजैक्शन दे रही है और जो है कोई फॉरेन कंपनी वो डॉलर में ट्रांजैक्शन दे रही है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी ये ट्रांजैक्शन हो रही है इस एक्सचेंज में, ये एक्सचेंज साइमल्टेनियस तो होता नहीं है। जो पार्टी सबसे पहले करेंसी जो है वो सेल कर रही है, ऑफ कोर्स इसमें करेंसी की ये ट्रांजैक्शन हो रही है कि डॉलर के बदले जो है रुपी लिए जा रहे हैं या रुपी के बदले डॉलर लिए जा रहे हैं। तो जो भी कंपनी जो भी पार्टी सबसे पहले करेंसी देती है उसके ऊपर ये रिस्क रहता है ना कि हो सकता है कि सामने वाली पार्टी जो है वो उसको रिटर्न में जो है वो करेंसी ना दे। तो इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ये जो CLS हैं काम करती हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक पेमेंट एक एक सेटलमेंट रिस्क को कम करने के लिए पेमेंट वर्सेस पेमेंट मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका मतलब कि आपको तभी पैसा मिलेगा जब आप पे करोगे तो, ठीक है। मतलब ये क्लियरिंग हाउस फंक्शंस होते हैं, इसमें होता क्या है कि आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी आ जाती है जो कि इस ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट करेगी, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो कि एक जो दो पार्टी इस ट्रांजैक्शन कर रही है उनमें से एक मुकर जाए। तो ये एक तरह से क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम करती हैं थर्ड पार्टी, ओके। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 8 साल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो फोर्थ फेज़ ऑफ ज्ञान इनिशिएटिव को रीस्टार्ट कर रहा है। ज्ञान इनिशिएटिव साल 2015 में लॉन्च किया गया था। हमारे जितने भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ एंगेज करने के लिए ये इनिशिएटिव है ताकि इंडिया के एग्जिस्टिंग एकेडमिक रिसोर्सेज को हम ऑगमेंट कर सकें। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? IIT खड़गपुर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टे ऑर्डर। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपनी 2018 की जो जजमेंट है स्टे ऑर्डर्स के से रिलेटेड उसको रिव्यू करने के लिए जो है वो एग्री कर लिया है क्योंकि ट्रायल प्रोसीडिंग्स में उसकी वजह से डिले हो रहा था। तो स्टे ऑर्डर होता क्या है? जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि एक एक्ट होता है जिससे कि आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को या तो टेम्पररीली स्टॉप कर सकते हो या पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है, ताकि सिटीज़न के राइट को सिक्योर किया जा सके।
होता क्या है कि आप टेम्परेरीली कोर्ट जो है वो एक स्टे ऑर्डर दे देता है कि लीगल अथॉरिटीज़ जो है वो इस सिटीज़न पर एक्शन ना ले, या जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं किसी भी कोर्ट में, समझ लो ट्रायल कोर्ट में, तो उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक स्टे ऑर्डर दे देता है, ताकि जो है वो प्रोसीडिंग्स को रोका जा सके और उस पर्सन को एक मौका दिया जा सके अपनी इनोसेंस या फिर अपनी अपनी साइड जो है वो रखने का। ठीक है। तो जो ये स्टे प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये स्टे ऑर्डर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स और दूसरा होता है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स में पैरेलल प्रोसीडिंग्स अगर चल रही हैं तो उसको जो है रोका जा सकता है। अगर आपके खिलाफ एक कई कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसको रोक दिया जाता है, किसी एक मतलब सिर्फ एक ही प्रोसीडिंग चलने दी जाती है। और स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन में तो किसी भी वर्डिक्ट को या किसी भी जजमेंट को ही रोक दिया जाता है एनफोर्स होने से। ठीक है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि जो ये स्टे ऑर्डर पास किया जाता है किसी भी प्रोसीडिंग या किसी भी एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट, उसको उसका जो एक्सपायरी होती है वो 6 महीने की होती है, जिसको एक्सेप्शनल केसेस में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन इसकी वजह से जो है डिले हो रहा था केसेस में बहुत ज़्यादा। जो है स्टे ऑर्डर्स जब पास हो जाते हैं तो उससे जो है लीगल जो सिस्टम है वो उसमें जो जस्टिस है वो डिले होने लग जाता है। ठीक है। उसी को ही जो है अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो केस को हेयर करके आगे इसके ऊपर रिव्यू करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, उन्होंने इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं मिलेट्स पर उसको जो है प्रेज़ किया है और कहा है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर मिलेट्स हैं उनको भी जो है डेवलप किया जाएगा। इंडिया ने ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप जो है स्टैंडर्ड्स डेवलप कर दिए हैं 15 टाइप्स ऑफ मिलेट्स पर, और उसको ही जो है बेसिस बनाकर आगे इंटरनेशनल जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे। तो ये CAC या कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है क्या? एक इंटरनेशनल फूड सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 1963 में बनाया था। और ये जो है एक तरह से यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही के ही मैंडेट के अंदर काम करती है। और ऑफ कोर्स इसके रेगुलर सेशंस होते हैं हर साल जिनीवा और रोम में। और इसकी मेंबरशिप सभी FAO के मेंबर्स और WHO के मेंबर्स के लिए ओपन होती है। ठीक है। मिलेट्स क्या है? ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस है, जिनको आप मेजर, माइनर और सूडो कैटेगरीज में जो है वो क्लब कर सकते हो। मेजर मिलेट्स जैसे आपके सोरगुम, बाजरा, रागी, ऐसे ही माइनर मिलेट्स हैं कांगनी, चीना, कुटकी, झंगोरा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सब नेपच्यून प्लैनेट्स। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने 6 सब नेपच्यून प्लैनेट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि एक डिस्टेंट स्टार को जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं। तो ये स्टार है HD 110067, जो कि 100 लाइट ईयर्स अवे है कॉन्स्टलेशन कोमा बेरेंसिस में। ठीक है। और ये हमारे सन से 20% लेस मैसिव है। अब ये सब नेपच्यून प्लैनेट्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स जो है हमारी गैलेक्सी में है, जिनका जिनका वर्ल्ड रॉकी है और थिक एटमॉस्फेयर है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का, और इनका रेडियस जो है वो अर्थ और नेपच्यून के बीच का है, उनको हम सब नेपच्यून प्लैनेट कहते हैं। अगर हम नेपच्यून के बारे में देखें तो ये लास्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। इसका स्ट्रक्चर और सरफेस अगर हम देखें तो ये 6 रिंग्स हैं इसके आसपास, और ये एक आइस जाइंट है। वन डे जो है नेपच्यून का वो 16 घंटे का होता है, और लगभग 165 अर्थ ईयर्स लगते हैं नेपच्यून को अपने सन के आसपास जर्नी करने में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, आरोग्य मैत्री एड क्यूब। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब रिसेंटली गुरुग्राम में अनवेल किया गया है। तो इसको इंडिजिनसली डिज़ाइन किया गया है अंडर प्रोजेक्ट भीषम, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग सहिता एंड मैत्री। और इसमें 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स लगे हैं इमरजेंसी रिस्पांस के लिए। इसमें 200 पेशेंट्स को जो है वो
ट्रीट किया जा सकता है, लाइट है, ये पोर्टेबल है और इसको रैपिडली कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल में री इलेक्ट हुआ है और आईएमओ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो शिपिंग की रेगुलेशन के लिए बनाई गई है। इसको 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है शिप ऑपरेटर्स के कंटेक्स्ट में ये क्रिएट करने को जो है वो काम करती है और इनोवेशन और एफिशिएंसी इस अप्रोच से जो है वो लाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए और आपके सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और स्वीडन ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 COP वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में जो है वो लॉन्च किया है। तो 2019 में जो है फर्स्ट इसका जो वर्जन था वो लॉन्च किया गया था जिसमें कि 18 कंट्रीज़ और 20 इंडस्ट्री लीडिंग कंपनीज़ जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम जैसी कंपनीज़ जो हैं या सेक्टर्स इन्होंने जो है वो इसमें एक रोल निभाया जिससे कि वो ये चाहते हैं कि लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जाए। एक बेसिकली ये एक पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन का एक फोरम बन के सामने आया है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Green Credits Initiative. This topic is important for your environment section. So PM Modi has recently launched an initiative which is focusing on generating green credits through plantation on degraded wasteland. So this has been launched at COP28 in Dubai. So carbon credits are the permits which allow the owners to emit a certain amount of carbon dioxide or other greenhouse gases, and if they go beyond it, if let's say, let's learn through an example, that a company is mandated to emit only 100 tons of carbon dioxide. If it emits more than that, then they will have to purchase carbon credits. For example, they emitted 110 tons, then they will have to purchase the carbon credits for extra 10 tons, and they will have to purchase it from those people who have either planted crops or made plantations which have reduced 10 uh, 10 tons of carbon dioxide from the atmosphere. Okay, so they if they, let's suppose that this company which is allowed to emit up to 100 tons of carbon dioxide, if it emits only 90 tons or let's say 80 tons, then they will have 20 carbon credits available which they can sell to another company which needs them. Okay, which may have actually cross the threshold which is permitted to them. Okay, so this is basically we are incentivizing the companies to reduce greenhouse gas emissions. So if a company reduces 20 and B company increases by 20, then we are on an equal footing. So basically we would have to maintain 200 tons, 100 for both. If 20 tons is reduced by A, even if then 20 tons is increased by B, then still we would be maintaining the 200 tons criteria of carbon dioxide emissions. So now let imagine that on a global scale, if we put up a criteria that everyone on the earth or every company on the earth will have to emit only, let's say, 10 tons per year, then minor uh, reduction in one or minor increase in one can be compensated through these carbon credits. Okay, so this is the green credits initiative which aims to create an inventory of degraded wastelands which can then be utilized by planting for planting by individuals and organizations, and then they would be able to trade green credits. Okay, so let's suppose these participants planted trees which were later on found to be uh, reducing 50 tons of carbon from the atmosphere, then they would have earned 50 carbon credits. Okay, which they can sell in the market. So this green credits initiative is
making this entire process of registration to plantation, verification, and issuance of green credits digitized. So, this green credit program is an innovative market based mechanism which will incentivize voluntary environmental actions. And in India, Indian Council of Forestry Research and Education is serving as the GCP administrator. Okay, so there are several types of activities which can earn you green credits, like tree plantation, water management, sustainable agriculture, waste management, air pollution, mangrove conservation and restoration. So green credit registry and trading platform has also been created, which would facilitate this entire registration process and even the buying and selling of green credits. So the next topic is Cyclone Michong. This topic is important for your environment section. So Indian Meteorological Department has forecasted a cyclonic storm, Cyclone Michong, which is developing over southwest Bay of Bengal, and this is the fourth tropical cyclone of the year over the Bay of Bengal. So a cyclone, we know that it is a large scale system of air which rotates around the center of a low pressure area. So tropical cyclones are those which are formed only over warm ocean waters near the equator. The average speed of tropical cyclones is 120 kilometers per hour, and there is a low pressure area around these, in the middle of these tropical cyclones, which we call as I. Okay, so similarly there is extra tropical cyclones, as the name suggests. They are formed outside the tropics, in the temperate regions, like in between the 30 degrees to 60 degrees latitudes, and they also have low pressure areas inside them. They are also known as temperate cyclones. Okay, so they can also originate over the land and sea, and they also cover a larger area. So the next topic is Project Kuiper. This topic is important for your science and tech section. So Amazon has recently signed an agreement with SpaceX to launch three of the rockets of Elon Musk's Falcon 9 to support deployment plans for Project Kuiper. So Amazon's project is to build a network of 3236 satellites in low Earth orbit, which would provide high speed internet access anywhere in the world. So the aim is to bring fast, affordable broadband to unserved and underserved communities around the world. And these satellites will be placed in low Earth orbits, and they would then relay data traffic to and from gateway antennas and to the customers. So this is similar to what Starlink is involved, or Starlink is doing. Similarly, Airtel is doing it through OneWeb, and Reliance through Gigafiber. Okay. So the next topic is Clearing Corporation of India. This topic is important for your economy section. So RBI and Bank of England have recently signed a memorandum of understanding for cooperation and exchange of information in relation to the Clearing Corporation of India Limited. So this CCIL was set up in 2001 to provide guaranteed clearing and settlement functions for transactions in money, government securities, and foreign exchange and derivative markets, but it also provides non-guaranteed settlement for rupee interest rate derivatives and other cross-currency transactions. Okay, so what is the use of these clearinghouse function? What are the clearinghouse functions? So basically, this continuous linked settlement is an initiative by some of the world's largest foreign exchange clearing banks to eliminate the settlement risk in foreign exchange transactions. So, what is this settlement risk? So, imagine that you and me both are both are going to transact in foreign exchange. Let's suppose that I am purchasing dollars from you and I am paying you Indian rupees. But then there is a risk because this transaction is not happening simultaneously. I would be paying you rupees first, and you would there is a chance, there is a risk that you would take money from me, but you would not pay me dollars. So to eliminate this risk, we involve a third party, a trusted third party, which is this clearing house, and they would use this.
mechanism which is called the payment versus payment mechanism, which means that you would only get paid the Indian rupees only if you pay the dollars to this third party. So this third party acts as a trustee, and with in respect to certain amount of commission, they would eliminate this risk of settlement. Okay. So the next topic is global initiative of academic networks. This topic is important for your governance section. So 8 years after its inception, Ministry of Education is restarting the fourth phase of the global initiative of academic networks, which is the GYAN initiative. So GYAN initiative was launched in 2015, and the aim is to tap the talent pool of scientists and entrepreneurs internationally and engage them with the institutes of higher education learning in India to augment India's existing academic resources. Okay, so IIT Kharagpur is the nodal agency for the same. So the next topic is stay order. This topic is important for your governance section. So, so Supreme Court has recently agreed to review its 2018 judgment on the expiry of stay order to expedite trial proceedings. Okay, so a stay or stay order is defined as the act of temporarily stopping or postponing any judicial proceeding through the court or legal authorities in India to secure the rights of our citizens. Okay, so what happens is that, let's suppose that an individual uh, has certain evidences to share, but the proceedings are going, and uh, uh, and there are even parallel proceedings going. So to do complete justice, the court can put a stay order on the proceedings, and in case of there are parallel proceedings going on in several other courts or trial courts, then the order can be issued so as to stop the proceedings. Okay, there are two types of stay orders. First is the stay of proceedings. The second is the stay of execution. The stay of proceedings means that there are parallel proceedings going on which may affect the each other. So that's why the higher court issues, let's suppose the Supreme Court or high court issues these stay orders or stay of proceedings to stop those parallel proceedings. Okay, so then there is stay of execution, which means completely halting the enforcement of a verdict or judgment against someone who is who is believed who is believed to be innocent, or who is believed to be given a pardon. Okay, so these stay orders can persist conditionally or even absolutely. Okay, so in all pending cases, so what Supreme Court has done is that Supreme Court has issued order in 2018. Supreme Court has ordered Supreme Court has issued an order in 2018 regarding um, this that stay order can be issued at the maximum time of 6 months. And now Supreme Court is going to, because this 6 months was a period which was delaying the trials, and it was creating problems in the judicial proceedings, and leading to delay in justice. So that's why the Supreme Court has agreed to hear this case. Okay, so the next topic is Codex Alimentarius Commission. This topic is important for your economy section. So recently, Codex Alimentarius Commission, which has praised India's standards on millets, and it has accepted its proposal for the deployment of development of global standards for millets. Okay, so India has framed this group, a comprehensive group standard for 15 types of millets, and the Codex Alimentarius Commission, which is an international food safety and quality standard setting body, has been created by the World Health Organization and Food and Agriculture Organization of the United Nations in May 1963. Okay. So currently it has set standards for sorghum and pearl millet, and
what are these millets? Millets are basically collective group of small seeded annual grasses which can be clubbed into major, minor and pseudo categories. Okay. So the next topic is sub-Neptune planets. This topic is important for your science and tech section. So recently astronomers have identified six sub-Neptune planets which are orbiting in a rare synchronized dance around a distant star known as HD 110067, which is located approximately 100 light years away in the constellation 100 light years away in the constellation Coma Berenices, and it is about 20% less massive than our Sun. So, what are these sub Neptune planets? These are the most commonly observed types of planets in our galaxy, and they could be rocky worlds with thick atmosphere of hydrogen and helium gas, and these planets have a radii between those of Earth and Neptune. So, what is Neptune? Neptune is the last of the planets in our solar system, and it is made up of hydrogen, helium, and methane. So, it is encircled by six rings, and it is an ice giant. So, one day on Neptune goes by about 16 hours, and Neptune has such a long journey that it takes about 165 Earth years to go around once. So the next topic is Arogya Maitri Aid Cube. This topic is important for your governance section. So, world's first portable hospital, Arogya Maitri Aid Cube, was recently unveiled in Gurugram. So, Arogya Maitri Aid Cube is the world's first, of course, portable hospital, which has been designed indigenously under Project Bhisham, which means Bharat Health Initiative for Sahyog, Hita and Maitri, and it is made up of 72 detachable mini cubes, each being a specialized station for emergency response. It can treat as many as 200 patients, and these cubes are light and portable, so that's why they can be rapidly deployed anywhere. So the next topic is International Maritime Organization. This topic is important for your international relations. So India has been re-elected to the International Maritime Organization Council, and which this is a specialized agency of UN which is responsible for regulating shipping. So it was established in 1948 in London, and its role is to create a level playing field among the ship operators so that their safety, security, and environmental performance cannot be compromised. And this also encourages innovation and efficiency. So the next topic is Leadership Group for Industry Transition 2.0. This topic is important for your environment section. So India and Sweden have recently launched this Leadership Group for Industry Transition 2.0 during the COP28 World Climate Action Summit in Dubai. So since its inception in 2019, Lead IT has grown into a collaborative effort involving 18 countries and 20 industry leading companies. And this Lead IT initiative is centered around pivotal sectors like iron, steel, cement, and aluminium, and it has played a vital role in accelerating the adoption of low carbon technologies. Okay, so it is basically serving as a platform for public private collaboration. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.